जी नाज़रीन, इस वक्त मैं लिंकन्स इन के ग्रेट हॉल में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पर डाइन करते हैं, यानी कि खाना खाते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। सीनियर बैरिस्टर्स आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। उन्हें यहाँ पर सिखाया जाता है कि एज अ बैरिस्टर आपके अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए। तो ये वो ग्रेट हॉल है, बड़ा तारीख़ी एक हॉल है, जगह है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ पेंटिंग्स लगी हुई हैं इस पूरे हॉल में। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिसमें बहुत सारे हेड्स ऑफ द स्टेट्स जो हैं उनकी भी तस्वीर हैं, लॉ गिवर्स ऑफ द वर्ल्ड जो हैं उनकी भी तस्वीर हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन 16 के करीब वज़राए आज़म बरतानिया के इस इदारे से पढ़े हुए हैं। कुछ की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई हैं पीछे। मेरे साथ इस वक्त लिंकन्स इन के लाइब्रेरियन मौजूद हैं जिनका नाम गाय हॉबन है। आइए इनसे बात करते हैं और इस इदारे के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। हेलो मिस्टर हॉबन, हाउ आर यू? Hello. Would you like to tell us something about the importance of the Great Hall at Lincoln's Inn and all these portraits as well? Yes, well, the Hall of the Inn has always been the sort of focal point of collegiate life, where not only do you dinner and have meals, but also take part in activities like debates and moots after dinner. And it dates back really to the medieval origins of the Inns of Court as communal colleges where students lived and resided. And it's always been the focal point. We know that as far as this Great Hall is concerned, all the student barristers come here and they dine here. What is the idea behind? It's so they can mix with each other and mix with barristers to pick up the sort of professional ethos of the bar and to get a feel for from other more senior members of the inn how the law works and how the profession of the bar operates, and have a sort of close contact, personal contact, not just been having lectures in a lecture hall. Yeah, okay. I can see a lot of portraits here, a lot of paintings. Would you mind telling us who these people are? Some of them, some of the important personalities. Yes, well, there's the paintings of lots of quite famous judges. There's also, as you'll see, many coats of arms. This has always been a traditional form of... We've heard that 16 Prime Ministers of Britain have qualified from Lincoln's Inn. So are there any portraits of those Prime Ministers? What we have is not the portraits as such, but what we've got up over here is their coats of arms of not all 16, because there's one missing. Okay. But it starts from Robert Walpole, who was the very first Prime Minister when the post was created, going all the way through to Margaret Thatcher. Okay. The one missing is for Tony Blair. His arms are not up there, although we have a painting of him. I've seen his picture outside the Great Hall. Yes. And that's more than any of the other Inns of Court. Lincoln's Inn is unique in having so many Prime Ministers. But there's always been a very close relation between politics and the law. And that's one reason why we've got this strong association. So it's just not the Prime Ministers or the heads of these states that have qualified from Lincoln's Inn. You've got judges, you've got eminent lawyers from all over the world, and you've also got the pictures of some of the lawgivers of the world who you consider, Lincoln's Inn consider as the lawgivers of the world. So who are they? Well, this is represented on this very large fresco. This is a painting directly onto the wall. This hall was built in 1845, and shortly afterwards, a well-known Victorian artist called George Frederick Watts had studied the frescoes in Rome and wanted to produce a painting on the same scale. He chose as his theme, as you say, the lawgivers of the world. So you have the great Justinian, Edward I. So these are the whole world, not just England, and the whole of history represented in one very grand and magnificent painting. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बात मंसूब है कि उन्होंने लिंकन्स इन में दाखिला लेने का फैसला लिंकन्स इन में ग्रेट हॉल में लगे उस बोर्ड को देखकर मुतासर होकर किया जिसमें लॉ गिवर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया को कानून देने वाली शख्सियात की एक लिस्ट लगी हुई थी, और इस लिस्ट में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मौजूद था। इस बात का जिक्र कायद-ए-आज़म अपनी एक तकरीर में करते हैं। स्टैनली वॉलपर्ट, जो कि एक बहुत मशहूर अमरीकी तारीखदान हैं और जिन्होंने बरे-सगीर की तारीख पर और दुनिया के इस खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात पर भी बेशुमार किताबें लिखी हैं, अपनी किताब जिन्ना में लिखते हैं कि कायद-ए-आज़म की ज़बानी इस बोर्ड का तस्करा असल में एक हसीन धोखा था, क्योंकि लिंकन्स इन में ना तो कोई ऐसा बोर्ड लगा हुआ था और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कहीं लिखा हुआ था।
यहाँ पढ़ने वाले मुसलमान स्टूडेंट्स हमेशा उस बोर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बोर्ड कभी किसी को नज़र नहीं आया। मैं भी जब 2005 से 2006 तक इस इदारे में पढ़ रहा था, मैंने भी इस बोर्ड को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। लिहाजा अक्सरियत ये समझने लगी कि स्टैनली वॉलपर्ट ने अपनी किताब में सही लिखा है और शायद वाकई ही कायद-ए-आज़म को कोई हसीन धोखा हुआ होगा। लेकिन हकीकत यह है नाजरीन कि ये बोर्ड बिल्कुल मौजूद है, और आज इन द लाइन ऑफ फायर के इस खसूसी प्रोग्राम के तवस्सुत से हम आपको ये बोर्ड दिखाएंगे। ये है वो तारीखी बोर्ड जिस पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लॉ गिवर्स ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर लिखा हुआ है। जिस जमाने में कायद-ए-आज़म यहाँ पढ़ते थे, ये बोर्ड यहाँ लगा हुआ था, बाद में उतार दिया गया। हमारे इसरार करने पर इस बोर्ड को खसूसी तौर पर एक अलमारी से निकाला गया और अब ये आपके सामने है। लिहाजा आज इस प्रोग्राम के जरिए से हम स्टैनली वॉलपर्ट को ये जरूर कहेंगे कि कायद-ए-आज़म को कोई हसीन धोखा नहीं हुआ था। आप मेहरबानी करके अपनी किताब में तरमीम कर लीजिए। जब यहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट्स आते हैं तो वो उस बोर्ड को तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी वो बोर्ड यहाँ पर बाहर कहीं पर नहीं लगा हुआ। तो आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं वो हिस्टोरिकल बोर्ड दिखाने वाला हूँ जो आम लोग यहाँ पर आकर नहीं देख सकते, जो कायद-ए-आज़म ने तब देखा था और फिर यहाँ पे एडमिशन लेने का फैसला किया था। ये मेरे पास है, ये बोर्ड आप देख सकते हैं। स्टैनली वॉलपर्ट अपनी किताब में जिस बोर्ड का हवाला देते हैं, ये वो बोर्ड है और इसके अंदर लॉ गिवर्स ऑफ द वर्ल्ड में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया हुआ है। So the name of the Prophet Muhammad, peace be upon him, is written in this board as one of the lawgivers of the world. That's right. This board is showing the key to what's on the painting on the wall, in which the figures represented here. Yes. And of course, it was, as you may have said, one of the reasons that Jinnah joined Lincoln's Inn. He went round the other three inns of court and came to Lincoln's Inn. ये बोर्ड यहाँ पर अभी तक मौजूद है, आम लोगों के लिए देखने के लिए नहीं लगाया हुआ, लेकिन हमारे कहने पर स्पेशली इसको निकाला गया और आपके लिए हम ये आपको दिखा रहे हैं। तो ये वो तारीखी बोर्ड है जो मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और यहाँ पढ़ने का फैसला किया था। अकॉर्डिंग टू मी और 90% जो मेरे दोस्त हैं, इमरान खान उनकी आखिरी होप हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान हमारी होप है, हम जाएंगे, काम करेंगे।